Can you hear my voice? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Can you hear me, guys? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? That's good. So I think few people, only few people have joined till now. We'll wait for 1 minute, 1 to 2 minutes, so that other people will also join. Meanwhile, hopefully you had a great evening. आप सब ठीक कर रहे हो? So I think let me present my screen. Yeah, I can understand there is network issue. So yeah, hopefully we can get through this lecture, through this problem also. So can you see my screen now? क्या आप मेरी screen देख सकते हैं? Hello everyone. क्या आप मेरी screen देख सकते हैं? Okay, let's start. I think there is bit a lag, so I will try to go bit slow. Let me do one thing. Hello, can you see my screen now? And can you hear my voice? Am I audible? Yeah, that's great. So yeah, let's start with the chapter where we left in last week. So this is about equations in one variable. I think we started about this. Yeah, welcome to everyone. Uh, so this is a bit cold here, and early morning we can see the time 7:33 a.m. here, and outside temperature is around -4 degrees Celsius. So yeah, you can see there is some variation in my voice also, so sorry for that. If it is a bit troublesome, let me know through the chat. So can you see my screen? I think someone is posted that they can't see. Yeah, please, I think there is some network issue is going on, so that may be the reason. But I feel that I'm sharing the screen, so hopefully everyone is seeing the screen. So last time we left with equations in one variable. हमने देखा था कि कैसे one variable से different sum solve किए थे, या we tried to work on the word problems also, right? Then how these word problems are converted to the mathematical formulation, and then we solve the equations, right? So we assume there is something like x which is varying,
and we try to put it into mathematical formulation. हम mathematical formula में रखे उसे, और उसके बाद हमने उसको solve किया था, right? So there are different examples are there. But if you have any questions regarding, so that I can directly jump onto that, or we can go through the one by one some problems. So about these solved examples, let's see what they have mentioned. So we have to be very careful on the statement what they have given, and according to we have to make the mathematical formulation. So here, see, Joseph's weight is 2 times the weight of his younger brother, right? So we have to assume on any variable, right? Generally, we use X. So instead of X, you can use any Y, Z, or any letter. But generally, it's trained that we use X, Y, Z. Okay. Why do we use X, Y, Z? There is no such rule, but generally in our whole dictionary, we can see that X, Y, Z letters are not much used in the daily words, right? So whatever word we speak, whatever the words we write, so probability having X, Y, and Z is very less. So we can use those letters for our mathematical equations. So that's the only reason that's we go always X, Y, Z. And that's why we named our coordinates also. But yeah, you are free to use any letter. So Joseph's weight is 2 times the weight of his younger brother, and find the Joseph's weight if sum of their weight is 63 kg. So there are two statements is given, and according to that we have to make formulation and solve this equation. Okay, so let the weight of Joseph younger brother be X. Okay, so here what we are assuming that Joseph's younger brother weight is X kg, right? Then what will be the Joseph's weight? It is 2 times the weight of younger brother, right? So it will be 2 times X, because X is his younger brother's weight. So 2 into X is Joseph's weight, right? And from these two information, इस दो इंफॉर्मेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? वी नीड मोर इंफॉर्मेशन टू सॉल्व. सो अगर ऐसे इक्वेशंस आपको आते हैं कि आपको किसी ने कह दिया कि जोसेफ वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, इतना स्टेटमेंट है तो आप उसके पर सॉल्व नहीं कर सकते. दैट इज रिडंडेंट इक्वेशन हो जाते हैं. सो now they have given another information. Find the Joseph's weight if the sum of their weights is 63 kg. So दोनों के weight का जो sum है, addition है, वो 63 kg. तो हम क्या करेंगे? इनका एडिशन मतलब x इज जोसेफ यंगर ब्रदर वेट और 2x क्या है? जोसेफ का वेट है. सो उनका एडिशन कितना है? 63. Then if we add like 3x is equal to 63, and then we will divide both the sides by 3. हम दोनों साइड में 3 से डिवाइड किए, तो क्या आया आंसर? x is 21, राइट? सो x क्या माना था हमने? जोसेफ्स यंगर ब्रदर वेट. और फिर जोसेफ का वेट कितना है? 2 इंटू एक्स, 21 इंटू 2, दैट इज 42 kg. सो जोसेफ का वेट 42 kg है. ओके, सो अगर मैं कहूँ कि वेट ऑफ देयर सम इज नॉट 63 बट इट इज 71, सॉरी 72, तो क्या आप उन दोनों के वेट, जोसेफ का वेट निकाल सकते हैं? सो आई एम चेंजिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम 63 kg टू 72 kg, राइट? बाकी सब सेम है. क्या आप जोसेफ का वेट बता सकते हैं? कैन यू पोस्ट इन द चैट बॉक्स?
So it is like similar formulation, just I change the last value. So ये प्रॉब्लम सेम है, जैसे जोसेफ्स वेट इज 2 times the weight of younger brother. फाइंड जोसेफ्स वेट इफ द सम ऑफ देयर वेट इज 63 kg की जगह मैंने कह दिया कि आपको 72 kg, राइट? आई विल क्लियर ऑल द राइट. सो इसके जगह मैंने आपको अलग नंबर दिया 72. सो कैन यू टेल मी जोसेफ्स वेट? सो आपको सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना है और जोसेफ का वेट बताना है. सो ये सेम प्रॉब्लम है. इसमें instead of 63 kg we are using 72. Then what will be the weight of Joseph? क्या आप सॉल्व करके उसका आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में? Yeah, I can see someone has posted the answer. Anyone other than this? So here simply we are replacing 63 kg to 72. Yeah, so two students has posted the answer as 48 kg. So it is similar like x and 2x, and we know that x plus 2x is 63. Instead of 63 we are putting 72, right? So 3x becomes 72 here, right? So this x will become 24, and then Joseph's weight will be 2 into 24 is equal to 48 kg, right? So yeah, hopefully you had understood this problem. If you have any question, please ask in the chat box. So I just changed the number so that we can understand this problem in different way, right? So I will go to exercise 3. So here we will read the statement first. Ratna has 200 more than 3 times the amount of Rafiq has. If rupees 300 from the amount of Ratna are given to Rafiq, amount of Ratna will be 7 by 4 times the amount of Rafiq. Find the initial amount with Rafiq. So don't get scared by these big statements. So go one by one. So we will start like Ratna has 200 more
than 3 times of the amount of Rafiq, right? So it shows clearly that we have to assume for Rafiq. Okay, so that is also one type of problem that it like we can go with Ratna also, but formulation becomes so a bit uh, complicated. That's it. Otherwise we can solve by assuming Ratna as X or Rafiq as X, no problem. But here we can see that this is 3 times the amount of Rafiq has, right? So we have to assume Rafiq. So we will try to put it into the equation one by one. So Ratna has 200 more than 3 times of the amount of Rafiq. So now let the initial amount of Rafiq has X. Okay. So what will be the Ratna will have amount? It will be the 3x plus 200, right? So can you guys hear me very well? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Okay, okay. So there was some noise. That's fine. Okay. So now this is the first statement we have seen. Now go to the second statement. So what is second statement? If rupees 300 from the amount of Ratna are given to Rafiq. Okay. So from Ratna's amount, 300 given to the Rafiq, amount of Ratna will be 7 by 4 times the amount of Rafiq. So from this amount, like Ratna had 3x plus 200. So 300 has been given, right? So what will be the remaining amount with Ratna? 3x plus 200 minus 300. Okay. So what will be the amount of Ratna then? 3x minus 100. Okay. So if you do not understand any step, please you can ask me question in the chat box. So अभी क्या है इसमें से? ये तो रत्ना की अमाउंट हो गई 3x प्लस 200, उसमें से हमने 300 निकाल लिए और रफीक को दे दिए. तो रफीक की अमाउंट क्या होगी? रफीक की पहले अमाउंट थी x, नाउ इट इज 300, बढ़ गए. सो x प्लस 300. सो उन्होंने क्या बताया है कि नाउ द अमाउंट ऑफ रत्ना इज 7 by 4 times द अमाउंट ऑफ रफीक. सो अमाउंट ऑफ रत्ना बाय अमाउंट ऑफ रफीक यहाँ क्या आएगा? 7/4, राइट? सो हमें पता है अभी 3x माइनस 100 यहाँ से आ गया, राइट? और रफी की अमाउंट है x प्लस 300 यहाँ से. सो 7/4. तो यहाँ क्या आएगा? 4 × 3x - 100. ओके. सो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 × 3x - 100, क्योंकि ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 × x प्लस 300. ओके. सो अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 3 12x हो गया. 4 × -100 becomes -400. वैसे 7, यहाँ से 7 × x becomes 7x. 7 × 300 becomes 2100. ओके. सो हम बोथ द साइड जो भी कॉमन टर्म्स है उनको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे. जैसे x वाली टर्म है तो हम क्या करेंगे? यहाँ 7x है तो यहाँ ये इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 12x माइनस 7x. यहाँ -400 है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ जाके +400. ओके. सो 2100 plus 400. So what is the value? 2500, right?
So what is the final answer? Is 500. So रफीक के पास इनिशियली कितनी अमाउंट थी? 500, राइट? फिर रत्ना के पास कितनी अमाउंट थी? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? रफीक के पास 500 थे, तो रत्ना के पास इनिशियल अमाउंट कितनी थी? सो मैं आपको हिंट दूंगा कि you have to use this equation to find out Ratna's amount. I think someone has posted 600. So please check that this 500, we have to put 500 x as a 500 into this equation, right? So it will not be 600. So we know that x is 500, and now we have to put into this equation 3x plus 200, right? So it is like 3x plus 200. So what will be the answer? Hope everyone is attending this class. Please try to give answers. I can see that there are 8 students, but everyone's participation will be appreciated. So I'm not sure that how 800 or 600 number is coming, but if I will remove all this stuff. Okay, we know that Ratna had amount of 3x plus 200, right? And we know that x is 500 here. So if we want to put it here, then 3 into 500 plus 200. So can we solve this? It's 1500 plus 200 is equal to 1700. Okay. So can I ask student that how this 800 come into the picture? Like how this value? What did you calculate, guys? Can you write down the formula or anything in the chat box which you used? I think this is the roughing amount, and you try to put in this equation 500 plus 300, but we wanted to see the Ratna's amount, right? So Ratna's amount is 3x plus 200. So 3 into 500 plus 200. So 1500 plus 200, right? So if you have any doubt or any question, you can ask in the chat box. This is the practice set. Let's try to find some question. If you have any particular request that this problem need to be solved or this you feel difficult, we can solve now. If not, I will pick up any problem.
So ninth, right? Let's see. This is related to cricket match. I know people may be interested in watching cricket. Uh, what I will suggest, I know that some people do not like to watch cricket or any sports, but yeah, it's good to know the rules and follow those sports. It's not like if you do not like, then you will not मीन्स यू विल नॉट आप जाके उसके बारे में पता ही नहीं करना चाहेंगे. सो नॉलेज इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. सो क्रिकेट है तो क्रिकेट में जनरली हमें पता होना चाहिए कि एक ओवर होती है, एक ओवर में 6 बॉल फेंके जाते हैं. देन व्हाट आर द रन्स, रन्स मतलब क्या होते हैं. सो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है. जैसे क्रिकेट का हो गया, वैसे ही फुटबॉल है, या व्हाट इज इन फुटबॉल में फॉल क्या होता है, तो हैंडबॉल क्या होता है, या जो भी रेफरी पेनल्टी देता है, रेड कार्ड, येलो कार्ड, वो क्या होता है. ऐसे सिंपल सिंपल टर्म्स जो भी है, सो वो पता होने चाहिए. उनमें से कौन कौन से खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे फुटबॉल में हो गए. फिर देर इज अनदर गेम कॉल्ड अमेरिकन फुटबॉल, then baseball, ice hockey. There are different sports. I'm not telling you guys that go and play every sports, but you should have the basic information about almost most of the sports. It is good for you all. आप जब भी कहाँ भी जाएंगे तो ये इन चीज़ों को पता होना जरूरी है. ओके, एज अ जनरल नॉलेज. जैसे अभी देखिए, अगर if someone doesn't know what is mean by runs and this, it is bit difficult to understand this problem. मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्व तो कर पाएंगे, बट आपको पता होगा तो it's good. Okay, and this is not always that they will ask the question on the cricket, right? If you go outside the India, no one plays cricket, right? So there are few countries in the world, only 10, 10 or 15 maybe, maximum 20 countries who are playing cricket, and there are like 200 nations are there, 200 countries are there. So cricket is good, but try to understand the information from the other sports also. Okay, so let's go to the problem. So cricket player scored 180 runs in the first match. Okay, one cricket player is there. He has scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Okay, find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the 3 matches will be 230. Okay, so this is a very very good problem, which we will try to solve here. So let me see the space. Okay, so we know that okay, we know that a cricket player already scored 180 and 257, and find the number of runs he should score in the third match. So variable x will be the run score required in the third match. Okay, so how to put this into the equation format? So we know that x plus 180 plus 257 is the total addition. Okay, and these are the 3 matches, so average will be divided by 3, right, is equal to what? They have given the answer 230. Okay, can you solve this equation and can you give me the answer for x? So I will write in clear way here.
x plus 180 plus 257 divided by 3 is equal to 230. So this is the equation, and you have to solve, and please try to get the value of x and post it in the chat box. सो यहाँ हमने 3 से डिवाइड किया है, तो दोनों साइड 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, राइट। सो और उसके बाद इन दोनों को वहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट इज जस्ट algebraic calculation. So what will be the answer for x? So यहाँ हम जो क्रिकेटर को थर्ड मैच में स्कोर करना है उसे x एज्यूम कर लिए हैं, और देन x plus 180 plus 257 divided by 3 is equal to 230, and we are trying to solve for the equation x, variable x. So what is the value of x? Is it so difficult? क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये प्रॉब्लम? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स आल्सो, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो। Someone has posted answer 207, 207. Any other student who can post the answer? So if you are finding any difficulty, any doubt or any question, you can type in the chat box. So आपको कोई भी डिफिकल्टी लग रही है, so please write in the chat box. So यहाँ हम क्या कर रहे हैं, trying to find the score which that player has to get, like we are assuming it as x. So x plus 180 plus 257 divided by 3 is equal to 230.
राइट। सो डिवाइड बाय 3 क्यों किए, क्योंकि हमने ये 3 मैच का एवरेज निकालना है, और इज इक्वल टू 230। 230 इज दैट दे वांटेड टू मेक एन एवरेज। सो अगर हम 3 से 230 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर हियर? 690। 23 3 69, 690, राइट। तो 690 में से अगर हम 690 माइनस 257 माइनस 180 कर देंगे, सो व्हाट विल बी द आंसर? इट्स, सो क्या आएगा आंसर बताइए? 690 minus 257 minus 180 goes 253. Okay, so the player should score 253 runs in third match, then only he will get the average of 230. Okay, so all students, if you have any question, please do not hesitate, because you are the learner. I may teach and go from here, but you have to grasp this knowledge. It will be useful for you. If you do not understand now, uh, then it will be difficult to understand the further problems which will come into the next year or next to next year. Then you have to make your fundamentals very strong. So if you have any question, do not hesitate. No one is going to judge you that आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे आपको ये नहीं आता, नहीं। आपको जब तक ये नहीं आता, you have to keep trying, right? it uh, it may take some time, but hard work always pays off. Okay, so मैं अभी next chapter की तरफ जा रहा हूँ, congruence of triangles. So अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर में से, यू कैन ऑलवेज ping me, or post you can post in the chat box, right? और डोंट गेट स्केर्ड और एनीथिंग कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या है, एकदम आपको अगर सिली क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एक्स, दैट्स फाइन। या, दिस इज योर राइट टू अंडरस्टैंड, टू ये आपका हक है कि जानना, राइट, नॉलेज। सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट हियर। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछिए। डोंट मतलब हमेशा चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना, दैट्स नॉट गुड। सो ऑलवेज ट्राई टू पुट समथिंग whenever I ask the questions. It shows that you have the curiosity for learning. So आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Okay, then we will go to the next chapter, congruence of triangles. So हमने, I think, let's recall. Right answers the following questions are referring to adjacent figures. So which is angle opposite to the DE? That is, इस side के opposite angle कौन सा है? Angle DEF or angle F. Okay. Which is side opposite to angle E? Angle E के opposite कौन सी side है? DF. Okay. DF. Then which angle is included by side DE? साइड डी ई एंड डी एफ से कौन सा एंगल बना है? ये बना है, राइट। सो ये है एंगल डी, मतलब कोण डी। विच साइड इज इंक्लूडेड बाय
एंगल ई एंड एंगल एफ, एंगल ई और एंगल एफ से कौन सी भुजा बनी है? सो ई एफ, राइट? स्टेट द एंगल एडजेसेंट टू साइड डी ई, डी ई के एडजेसेंट में कौन कौन से एंगल है? सो एंगल डी है और एंगल ई है। ओके, सो ये आपको मतलब हमने सीखा होगा previous standards that these are the sides and these are the angles, three angles. So yeah, we will try to build upon that. So आपने लास्ट स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि सिंपल इसके अपोजिट कौन सा एंगल है वगैरह, और इस बार हम उसके पर आगे बढ़ेंगे. So yeah, this is the way we build our foundation one by one in every standards. Okay, so the figures which exactly coincide with each other are called congruent figures. So अगर कोई भी फिगर एक दूसरे को परफेक्टली मैच करती है तो उसे हम congruent कहते हैं. The segments of equal lengths are congruent and angles of equal measures are congruent. So segments of equal length, so जो भी segments है equal length, जो भी equal length के होंगे उसे हम congruent कहेंगे. और एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स, मतलब जो भी इक्वल होते हैं तो हम उन्हें भी कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. सो लेट्स सी, अगर यहाँ दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं और इनकी भुजाएं सेम है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है. ओके, सो provided this triangle is similar to this triangle. Okay, if these two triangles are exactly similar उसका एंगल लेंथ, तो उनकी जो भुजाएं होती हैं तो उन्हें कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है. और अगर इनकी एंगल सेम है तो उनको वो भी हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. इक्वल मेजर्स. ओके, बोथ आर इक्वल, राइट? सो आई थिंक मराठी में इसे एकरूप कहते हैं. I do not remember exact word now, but yeah, around that. If there is any other word in Marathi or Hindi, you can type in the chat box. So congruent. So let's learn. यहाँ देखिए, congruence of triangle, right? Activity. Observe the adjacent figures. Okay. Copy triangle है, ये दोनों हम देख सकते हैं. Copy triangle ABC on tracing paper. Place it on triangle PQR. So ये भी एंगल बना के हम पेपर पे देख सकते हैं. सो यहाँ क्या करना है? पॉइंट ए कोइंसाइड्स विद पॉइंट पी. ओके, और ये यहाँ रखेंगे एक दूसरे को इस ट्रायंगल के ऊपर, और ये क्यू को बी के जगह रखेंगे और आर को सी के ऊपर रखेंगे. अगर हम दोनों देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट बोथ ट्रायंगल कोइंसाइड एग्जैक्टली विद ईच अदर, दैट इज दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. इसलिए हम एक ये दूसरे के ऊपर मैच करेंगे एक दूसरे से तो एकदम सिमिलर रहेंगे, एकदम सिमिलर. सो उसे क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो इन दिस एक्टिविटी वन वे ऑफ प्लेसिंग ट्रायंगल ABC ऑन ट्रायंगल PQR इज गिवन. तो अभी हमने क्या किया कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, दूसरा ट्रायंगल बनाया और एक दूसरे के ऊपर रखा, right? This is the method we have followed, but there should be another method, so we will go through that. But if we place point A on the Q and point B on R, अगर ये हम इनका पॉइंट्स बदल देंगे तो it will not be congruent, right? Then two triangles will not coincide with each other. It means that vertices must be matched. So जो भी ये बिंदुज हैं, इनके बिंदु वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए. मतलब ये P A की जगह ही जाना चाहिए और Q यहीं जाना चाहिए. अगर हम इनको चेंज करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे. एक्चुअली दे आर कॉन्ग्रुएंट, बट हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो इक्वल नहीं है. So we have to be very careful while placing the vertices also. It means that vertices must be matched in specific way. The way of matching the vertices is denoted by one-to-one correspondence. So इसको क्या कहते हैं? One-to-one correspondence कहते हैं. कैसे मैच करना है? जैसे point A corresponds to P, denoted by A, और ये A to the P. So
congruence of triangle, right? Yeah, this what we are learning is not congruence of triangle. So congruence of triangle is nothing but what we are trying to match this triangle, right? So here not only sides and but we have to match the vertices also. सो इनके जो बिंदु होते हैं वो भी सेम होने चाहिए जो भी है. सो यहाँ देखिए A corresponds to P, right? वैसे two triangles are congruent in corresponds to A corresponds to P, B corresponds to Q and C R. सो ये जो vertices है अगर वो वैसे रखेंगे तो ही वो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कहेंगे हम लोग. ओके अगर वो नहीं रखेंगे तो आपको वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिखेंगे, सेम नहीं दिखेंगे. ओके और यहाँ एक होती है सिमिलरिटी. सो मैं सिमिलरिटी पर नहीं जाऊंगा अभी. दिस इज कॉन्ग्रुएंसी. सो वी विल स्टिक टू द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ओनली. सिमिलरिटी इज डिफरेंट. मैं सिमिलर बहुत ही अलग टर्म है. ये मैं सेम है कहूंगा बट सिमिलर है वो तो मतलब दिस इज डिफरेंट टर्म इटसेल्फ. सो हम लोग उसमें अभी नहीं जाएंगे. तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है. ओके एग्जैक्टली सेम. और उनकी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो करस्पॉन्ड्स टू 3 पॉइंट के जो है तो वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मैच होने चाहिए, राइट? जैसे ए और पी, बी और क्यू और सी और आर, देन ओनली दिस टू ट्रायंगल्स आर congruent. When two triangles are congruent in this way, we get 6 congruency. Like मतलब यहाँ 6 प्रकार के हमें चीजें मिलती है. जैसे देखिए एंगल ए becomes angle equal to angle P, angle B angle Q के साथ similar है. Okay, sorry, it's congruent, right? We are calling it as congruent triangle. So because these measures equal, they are equal in size. So angle C is congruent with angle R. So ये हो गया angle R, right? ये हो गया A, angle A. So मैं अब denote कर रहा हूँ. सो सिमिलर ट्रायंगल्स है वो मैंने एक सिमिलर सिंबल रख दिया है वहाँ. these are congruent, sorry, it's not similar, it's congruent triangle. Okay, so segment A equal to segment PQ. Segment AB is segment PQ. Okay, segment BC is QR, and last one is, so I put similar type of or same notation for each segment, right? So there are 6 congruences. So यहाँ 6 प्रकार के congruences हैं. So 3 साइड के हो गए, साइड्स माने भुजाएं या सेगमेंट्स के, और 3 एंगल से हो गए. Okay, so we have to match 6 congruences to say that okay, these triangles are incongruent. Okay, so 2 प्रकार हो सकते हैं. जैसे अगर हम कह देंगे कि कॉन्ग्रुएंट है तो ये 6 के 6 चीजें हमें मिल जाएगी. या अगर ये 6 चीजें पता है और 6 चीजों से हम कह सकते हैं कि दोस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके sorry. Therefore, it is said that triangle ABC and triangle PQR are congruent in the correspondence to ABC PQR. So ये हमने वर्टिसेस मैच करने के लिए ऐसा कर दिया. ABC corresponds to PQR. Okay, so A corresponds to P, B corresponds to Q, and C corresponds to R. Then we can write it as triangle ABC is congruent with triangle PQR. So triangle ABC and triangle PQR implies that in the correspondence are A, triangle P, A corresponds to B, B corresponds to Q, and C corresponds to C, and 6 congruences mentioned above.
since congruences are like three segments and three angles. Therefore, while writing the congruence of triangle, we have to take care that order of vertices, right? So whenever we are writing this triangle, so we have to see that what uh, order we are following. So जिस भी order से लिख रहे हैं वो we have to see that okay A B C, so यहाँ भी P Q R लिखा है, हम Q P R नहीं लिख सकते because then it will not be like vertices are not corresponds to each other. Okay, we have to uh, make this order of vertices means order of vertices gives you to a certain congruences. Okay, so let's see this. Triangle ABC and triangle PQ are congruent here. Okay, their congruent parts are indicated by the identical marks. So जो भी है जैसे देखिए ये एंगल है तो वो जो भी कॉन्ग्रुएंट्स हैं वो मैच कर दिए, जैसे एंगल सी एंगल आर है, एंगल ए इज करस्पॉन्ड्स टू एंगल क्यू है, वैसे ही एंगल बी इज करस्पॉन्ड्स टू एंगल पी है। ये दोनों इक्वल एंगल्स है या कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है। सिमिलरली उन्होंने सेगमेंट्स भी दिए जैसे सी बी इक्वल टू आर पी है। सो एवरीवन हैज रिटन लाइक अनिल, रहना एंड सुरजीत। सो which is the right answer? Can you write in the chat box who has given the right answer? Anil, Rehana और सुरजीत। तो हमने देखा अभी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कहेंगे तो उनका एक वर्टिसेस वो भी मैच होने चाहिए, then only we can say that it's right answer or not. Okay, so yeah, Surjit is one of the answer. So अनिल और रहना ने भी आंसर दिए हैं। सो आपके हिसाब से हु इज द राइट? सुजीत, अनिल और रहना। Any other student who can volunteer to give answer? That's good. Yeah, if it is wrong, that's fine. No one is going to judge you. No one is going to fail you in this exam. Okay, it's fine. Life is much bigger than what you think to post in the chat box, right? Think in that way. Life has very, very great values and much bigger than posting into the chat box. It's very simple thing and you can do it. So which is the right answer here? Anil, Rehna or Surjit? Who has given the right answer? That triangle ABC and triangle PQ are congruent. Any other students who want to volunteer for the answer? Okay, so Surjit is right answer, and so triangle ABC and triangle PQR are congruent. Then ABC and PQR, like A corresponds to P, right? So is this the right answer? Surjit answer is right. Everyone is telling that, okay, Surjit answer is right. But if you see that angle A corresponds to angle Q, right? C corresponds to R, right? And B corresponds to P, then how Surjit will be the right? You have to match the vortices. So I think that's fine. I know that Surjit is not right answer. So A corresponds to Q
and B corresponds to P. So Anil's answer is the right answer, right? Any doubt or any question you can ask me here? Yeah, you might have seen that, okay, ABC and PQR is given, so Surjit is right, but Anil is right. Okay, so A is corresponds to Q here. So A is corresponds to Q, C here, and B corresponds to P, B corresponds to P, and C corresponds to R. Okay, so this way ABC and QPR are right. And BAC and PQR. What about Rana? Rana is right or wrong? Why it is wrong? Okay, see, BAC and PQR. So B corresponds to P. Is that correct? Okay, correct. A corresponds to Q. Is that correct? It's correct. And C corresponds to R. Yes, A is corresponds to Q. It's right. So this is also right. Okay. Only Surjit has given the wrong answer. Okay, that's fine. It's good that we followed this exercise. Anyway, I think this is the time for today's class. Bye bye to everyone and have a great evening. Take care. See you in the next lecture. Bye bye to everyone and have a great evening. Thank you. Thank you to everyone.